Good morning, student. Welcome back with next application part of Ampere circuital law. And in this topic, we have to find the strength of magnetic field inside a solenoid. 10th क्लास के अंदर आपने solenoid के बारे में आपने पढ़ रखा होगा. Closely wounded coils can be called as solenoid if the length of the coil became more than its diameter. तो उस coil को हम solenoid का नाम दे सकते हैं. Now, let us consider a solenoid having n number of turns per unit length and I current is passed through it. As current is passed through it, it will produce magnetic field. Okay, and magnetic field is very strong inside the solenoid as compared to any point outside the solenoid. Now, in order to find the strength of magnetic field intensity inside, we have to consider a closed loop. यहां पर उस closed loop को हम एक rectangular shape में consider कर रहे हैं. Consider a closed loop in the shape of a rectangle PQRS. Now, as we know that according to Ampere circuital law, the line integral of magnetic field, it is equal to mu naught times of I. Line integral of magnetic field for the given loop, it can be expanded in four terms. Integration of B dot dl from P to Q plus integration of B dot dl from Q to R plus integration of B dot dl from R to S plus integration of B dot dl from S to P. ओके, अब यहां पर इस लूप के लिए हम क्लोज्ड वर्ड यूज कर सकते हैं, दैट इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द क्लोज लूप PQRS. जब उसको हम चार अलग अलग पार्ट में ले रहे हैं तो PQ, क्या ये जो पार्ट है क्या ये क्लोज लूप है, इसलिए हमने इस पर नॉट साइन नहीं लगाया, इस पर भी नॉट साइन, इन इंटीग्रेशंस पर हमने नॉट साइन यूज नहीं किया है. अब आप ध्यान दें, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज स्ट्रॉन्ग एंड लेट इट्स वैल्यू इज B. And in this case, if we consider any loop element, तो loop element और magnetic field दोनों का direction क्या है? Same. But if we consider the loop element on this part, तो direction of loop element is upward, जबकि magnetic field का direction क्या है? Along the axis of the solenoid. Outside, अगर हम loop element consider करते हैं तो this will be the direction of loop element, but the strength of magnetic field outside is nearly zero as compared to the strength of magnetic field inside the solenoid. Now again at this part, if we consider the loop element, तो loop element यहां पर downward direction में है, but the direction of magnetic field is along axis from left to right. तो for this part, B and DL, they are in same direction, and for this part, B and DL, they are at right angle to each other. Even for this part, B and DL is in downward direction, B is along the axis of the solenoid. They are inclined at 90 degree. And for this part, the magnetic field outside is nearly zero. अगर हम इसके integrations को find out करें for different part, तो for this part, अगर हम इसको expand करें, तो we can write B DL cos of 0. Because दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0. सेकेंड पार्ट के केस में B और DL में एंगल 90 है, तो देयरफॉर वी कैन राइट B DL cos of 90 Q to R. फॉर थर्ड पार्ट strength of magnetic field is 0 DL from R to S, and for fourth part the integration limits are from S to P, and strength of magnetic field is B, element is DL, and they are inclined at 90 degree, इसलिए हम क्या लिखेंगे? cos of 90. And we know that cos of 90 is 0, means अगर एक कंपोनेंट भी 0 है तो तीनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0. यहां पर भी तीनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0. यहां पर मैग्नेटिक फील्ड 0 है, इसलिए ये वाला पार्ट भी 0 हो जाएगा. तीनों इंटीग्रेशन 0 हो गए, सिर्फ एक इंटीग्रेशन बच रहा है, एंड cos of 0 is equal to 1. Therefore we can write it as B DL limits from P to Q.
अब यहां पर आप ध्यान देना कि वेल इनसाइड द सोलेनॉइड द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस पार्ट ऑफ द लूप सेम है. इट मींस B is constant. It can be taken out from the integration sign. So within integration we have only dl and the limits are from P to Q. Limits are from P to Q का मतलब है इस P से लेकर Q तक जितने भी छोटे छोटे एलिमेंट है उन सब का सम that will be equal to the length of the loop from P to Q and which is equal to PQ. Hence line integral of magnetic field is equal to B into PQ. We can mark this equation as equation number first. Now as per Ampere circuital law, अगर हम एम्पियर सर्किटल लॉ की बात करें तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द क्लोज लूप इट इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट पासिंग थ्रू द लूप. अब यहां पर एक लूप आपको नजर आ रहा होगा, ये रेक्टेंगुलर लूप है पी क्यू एस. ओके, इससे टर्न्स पास हो रही हैं. ओके, ऑल टर्न्स आर पासिंग थ्रू इट. अगर आप ध्यान से चेक करें, फर्स्ट टर्न, सेकंड टर्न, थर्ड टर्न एंड सो ऑन. एंड n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. इसकी लेंथ कितनी है? PQ. तो इस PQ लेंथ के अंदर कितनी टर्न्स होगी उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? n मल्टीप्लाई बाय PQ. ओके, these are the total number of turns in this part and each turn carries same amount of current. Means total current passing through the closed loop PQRS is equal to n into PQ into I. Mark this equation as equation number second. Now if we compare equation number first and second, दोनों equations को अगर हम compare करें तो we can write B into PQ is equal to mu naught times of n into PQ. PQ से PQ cancel and we have B is equal to mu naught Ni. This relation clearly indicates that the strength of magnetic field inside the solenoid, it depends upon number of turns per unit length and it also depends upon current passing through current pass through the loop. For free space, the strength of magnetic field intensity inside the solenoid is given by mu naught Ni. Okay, हम इसको B naught लिख रहे हैं. B naught का मतलब when there is no medium inside the coil. Now, if the whole space of the coil is filled with some medium, then the strength of magnetic field intensity inside the solenoid is given by mu times of Ni, where mu is the permeability of that medium. Okay, and we know that relative permeability is the permeability of the medium divided by permeability of free space. Therefore, permeability of the medium, it can be expressed as mu r times of mu naught. Hence, the strength of magnetic field inside the solenoid, it can be expressed as mu r times of mu naught Ni. Okay. Determine the strength of magnetic field at the end. Means when we find the strength of magnetic field at the end, it will be equal to half of mu naught Ni. The reason is that when we consider the point at the end of the solenoid, उस केस में जो हम लूप लेंगे वो लूप इस तरह का आएगा एंड दैट लूप ओनली कंटेन्स हाफ नंबर ऑफ टर्न्स. हाफ पार्ट के अंदर कोई भी टर्न्स नहीं है. दैट्स व्हाई द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड at the end it will become equal to half of the strength of magnetic field inside the solenoid.